नमस्ते। आप सभी को आप सभी का स्वागत सायंकालीन सत्र में। सायंकालीन वंदना, अर्पणा एवं प्रारंभिक वंदना। योऽसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाक्षातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावकसङ्घो तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्घं इमे हि सकारे हि यथार्हम् आरोपिते हि अभिपूजयाम साधुनो भन्ते भगवा शुचिर्परिनिपुतोऽपि पश्चिमाजनतानुकम्पमानसा इमे सकारे दुःखतपन्नाकार भूते पटिगणहातु अमहाकं दीघरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादे स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो साङ्घं नमामि हन्दमयं बुद्धस्य भगवतो पुबभागनमकारं करोमस्ये नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स उत्थानुसति हन्दमयं बुद्धानुसतिनयं करोमसे तं खोपन् भगवन्तं एवं कल्याणोऽप्यतिसद्यो अभुगतो इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तमोऽध्यायते
तरो पुरिषदम्ब सारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति छन्दमयं बुद्धा विगीतिं करोमस्ये बुद्धवारहन्तवरतादिगुणाभियुक्तो शुद्धाभियान करुणा हि समागतत्तो बोधेशियो सुजनतं कमलं वसूरो वन्दामहं तमरणं शिरसा जिनेन्दम् बुद्धो यो शावं पाणिनं शरणं क्षेमं उत्तमं पठमानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं बुद्धस्साहस्मि दासो वा बुद्धो मे सामि केसरो बुद्धस्साहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि बुद्धस्यैव सुबोधितम् नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण वध्येयं शत्रुशासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं इध सर्वेऽपि अन्तराया मे माहेषुं तस्य तेजसा कायेन वाचाय वाचेतसा वा बुद्धेः पकतं मयायं बुद्धोपटिगणहातु वक्ष्यन्तं कालान्तरे संवरितुं वा बुद्धे धम्मानुसति हन्दुमायं धम्मानुसतिनयं करोमसे स्वाक्षातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पश्चातं वेदितव्यो विनुहीति छन्दमयं धम्माभिगीतिं करोमसे स्वाक्षाततादिगुणयोगवशेन सेयो यो मग्गपाकपर्यतिविमुखभेदो धम्मोऽकुलोकपथना तद्धारिधारी वन्दामहं तं हरं वरधम्ममेतं धम्मो यो सपपाणिनं शरणं क्षेमं उत्तमं ဒုတိယ ानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहम् धम्मस्साहस्मि दासो वा धम्मो मे सामिकीसरो धम्मस्साहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदम् वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वध्येयं सत्थुशासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं इध
सर्वेऽपि अन्तरायामे माहेषुं तस्य तेजसा कायेन वाचाय वाचेतसा वा धम्मेकुकमं प्रकटं मयायं धम्मोपटिगणहातु वचयन्तं कालान्तरे संवरितुं वा धम्मे संघानुसति संगाभिगीति हन्दमयं सङ्घानुसतीनयं करोमसे सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुक्कला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो आहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति हन्दमयं सङ्घाभिगीतिं करोमसे सधम्मजो सुपटिपत्तिगुणाधियुक्तो यो अट्ठविधो अरियपुगल संघसेठो शीलादिधम्मपवराशयकाय चित्तो वन्दाम् अहं तम् अरियान् गणं सुशुद्धं सङ्घो यो सभ्यपाणिनं शरणं खेमम् उत्तमम् ततीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं सङ्घस्साहस्मि दासो वा सङ्घो मे सामिकेश्वरो सङ्घस्साहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि सङ्घस्सोपटिपन्यतम् नत्थि मे शरणं अयं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेन वड्डेयं सत्तु शासने सङ्घं मे वन्दमानेन यं पुयं प्रसुतम् इधः सभ्येऽपि अन्तराया मे माहेषुं तस्य तेजसा कायेन वाचेतसा वा सङ्घे कुकमं प्रकृतं मय्यायं सङ्घोपटिगणः तु वचेयन्तं कालान्तरे संवरितुं वा सङ्घे सर से रिक्वेस्ट है आगे की निर्देश देने के लिए। उसकी तरह थोड़ी देर हम पहले चित्त को समाहित कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे।
पिछले कुछ दिनों में हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई अशुभ संज्ञा के बारे में और स्केलेटन को अट्ठी संज्ञा के बारे में। और कई प्रश्न थे जो उठे, उनका समाधान भी किया गया, लेकिन और भी कई कमेंट्स जो सुनने को मिले उससे लगा कि शायद कुछ और क्लैरिटी की आवश्यकता है। हालांकि जो बातें मैं कहूँगा वो पहले भी कही जा चुकी हैं, शुरू शुरू में ही कह दी थी, बट स्टिल आई थिंक दे बियर अ रेपिटेशन। क्योंकि यही क्यों करना है, ऐसे क्यों, मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम अप्रिशिएटिंग कि इस तरह के प्रश्न होने चाहिए। तो why can't we appreciate beauty? Why can't we, is it really necessary? Why can't we see the things as they really are? And why do you have to say that it is beautiful or not beautiful? They're very valid questions, really. आज दिन को मैं इस पे काफी रिफ्लेक्ट किया, and how I can explain, because मेरी भी कुछ limitations है, I am conditioned by my own ways of understanding. तो कई बार वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि जो सवाल पूछ रहा है वो ऐसे सवाल कैसे पूछ सकता है। सो आई ट्राई टू स्टडी एंड फ्रॉम बुक्स, खासतौर पे वनरेबल पाइतो की जो बुक है और उनके जो रेफरेंसेस थे, सुत्ता वगैरह, तो कुछ मुझे लगा कि इस तरह से करेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आज उस पर आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूँ कि वो क्लियरिटी बढ़ जाए, हम क्यों कर रहे हैं, कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं और इसके करने के क्या लाभ है। पहला बात जो हमने शुरू शुरू में भी कही थी कि जो कौन सा ध्यान हमें किसी को करना चाहिए वो साधक के चरित्र पे डिपेंड करता है, टेम्परामेंट पे, मेंटल मेकअप पे डिपेंड करता है। और चर्चा भी की थी राग चरित्र, दोष चरित्र, मोह चरित्र, श्रद्धा चरित्र, वितक्क चरित्र एंड सो ऑन, ऐसे चरित्र होते हैं। बेसिकली अगर राग चरित्र है, मतलब ज्यादा टेंडेंसीज राग की हैं, ग्रीड की हैं, लोभ की हैं, तो उन लोगों का जिनका नॉर्मल बिहेवियर लोभ से, राग से प्रेरित रहता है, उसे कहा जाता है राग चरित्र। तो उनका मन जो है सुंदरता की तरफ, एलिगेंस की तरफ, उस तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। तो उनको सजेस्ट किया जाता है खासतौर पे कि अशुभ संज्ञा काम करिए। कायगता सती, कायगता सती में और भी चीजें आती हैं और अशुभ संज्ञा इज पार्ट ऑफ इट। जिनका दोष चरित्र है, जिनको अपनी काया के प्रति कुछ इनएडिक्वेसी लगती है, मैं तो उतना सुंदर नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मेरी आंखें ठीक नहीं है, मेरे कान ठीक नहीं है, मेरे दांत ठीक नहीं है, दिस इज कॉमन थिंग्स वी हियर, आई हियर फ्रॉम समटाइम्स फ्रॉम माय ग्रैंडडॉटर आल्सो। सो उनके लिए कहा जाता है कि जिनको अपने शरीर के प्रति इनएडिक्वेसी, सम काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म रहता है, उनको अशुभ संज्ञा नहीं करनी चाहिए। ठीक ऐसे ही जिसका अशुभ संज्ञा का एक और करेक्टर होता है कंप्लेनिंग नेचर। तो कंप्लेनिंग नेचर का क्या मतलब हुआ कि हर चीज में जहां भी जाएंगे उसका, जैसे वो सिद्धिमा का एग्जाम्पल दिया जाता है कि राग चरित्र और दोष चरित्र का क्या फर्क है। कि दो आदमी एक घर में गए फ्रेंड से मिलने, एक का ध्यान जाता है कि वहाँ सुंदर फोटो लगी हुई हैं, सुंदर फूल हैं, और वो उसी में उलझ के पूछता रहता है कहाँ से लाए, मैं भी खरीदूंगा ये सब। दूसरा है कि उसको लगता है ये पर्दे ठीक नहीं है, ये मैच नहीं कर रहे हैं, ये देखो कमरे में सफाई ठीक से नहीं की हुई, ये एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, ये कह इधर होना चाहिए था। सो देयर इज ए क्रिटिकल नेचर, कंप्लेनिंग नेचर, दैट इज दोष चरित्र।
तो दोष चरित्र वालों के लिए कहा जाता है दे शुड प्रैक्टिस मेत्ता भाव। इनफैक्ट राग चरित्र वालों को कहा जाता है आप मेत्ता भावना कम ही करिए। क्यों? जो राग चरित्र वाला मेत्ता भावना करता है तो बहुत क्विकली इट विल गो टू अफेक्शन, इमीडिएटली इट विल गो टू अफेक्शन, उसका अटैचमेंट बढ़ता चला जाएगा। सो दीज आर wise advice developed by great masters over centuries or millennia. So we have to appreciate those things. कुछ साधनाएं ऐसी कही हैं जो सब सिचुएशन में एप्लीकेबल है। जनरली जो अधिकतर लोगों के लिए कहा जाता है, एक्सेप्ट फॉर दोज आर एक्सट्रीमली राग ओरिएंटेड, की मेत्ता ठीक रहती है। मरणानुसति सबके लिए उचित बताई गई है। और कुछ आचार्य अशुभ संज्ञा को भी बताते हैं कि 99.9% लोगों के लिए तो दोनों ही चीजें हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक ही करेक्टर होगा कि सिर्फ दोष होगा, राग नहीं होगा, दोनों ही होते हैं, बट जो डोमिनेंट है उसको देखा जाता है। वी एक्चुअली शुड प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम, but more emphasis should be given to the one which matches with our dominant charitra. And then it comes to this question of अशुभ संज्ञा जैसे था। और ये संज्ञाएं जो हैं, what are these संज्ञास actually? What do you think? संज्ञा का क्या तात्पर्य है? जब हम कहते हैं संज्ञा कल्टिवेट करो, अशुभ संज्ञा कल्टिवेट करो, what does it mean really in terms of the Dhamma practice? Where does it fall in our eightfold path? हम सब eightfold path ही तो फॉलो करते हैं। सम्यक दृष्टि सर। It's a part of सम्यक दृष्टि। Yes, it's a part of right view. It's a part of, it's not exactly that, but it is yoniso manasikara, wise reflection, which leads to right view, which is a precondition for right view. So wise and unwise reflections are happening all the time. Mostly unwise. If you are not really trained in Dhamma, you get carried away by the beauty, carried away by the ugliness of things. So basically all these sannyas are an approach of yoniso manasikara, ठीक से देखना। योनिसो मनसिकारा का उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? हमारे मन में प्योरिटी आए, संसारिक इंटरेक्शन से हमारे मन में नेगेटिविटी ना जागे। बेसिकली ये उद्देश्य है। सम्मा वायामो वाला कह लीजिए कि हमारे संसार से इंटरेक्शन तो होता ही रहेगा, कोई जीवन भर रिट्रीट में तो बैठेगा नहीं, तो संसार से इंटरेक्शन होगा और हमारा मानस रेस्ट्रेंड नहीं है और हमारी सोच बहक जाती है संसारिक इंटरेक्शन से, तो राग द्वेष बढ़ते ही चले जाएंगे। तो इसलिए कहा वाइज रिफ्लेक्शन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और वाइज रिफ्लेक्शन के भी कई तरह हैं, बहुत सारे। आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल ऑफ देम। बेसिकली उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है दोज विच एम एट इम्प्रूविंग रिड्यूसिंग आवर अनहोलसम टेंडेंसीज, मतलब वो समझ लीजिए संवर प्रधान जो उसमें कहा जाता है सम्मा वायाम, कि हमारे को संसार से देख के, संसार से इंटरेक्शन करके हमारे में राग द्वेष ना बढ़े, एक ब्रेक लग जाए। कहा जाता है ना, अकुशल चेतनाएं मन के अंदर ना आए। तो क्या होगा उससे कि हम जिस किसी चीज से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम उसके प्रति राग या द्वेष से बहेंगे नहीं, तो चित्त हमारा बेचैन नहीं होगा। सो इट इज अ काइंड ऑफ टेम्परेरी suppression of craving or aversion.
by proper reflection. And then what does it help? It helps us in samadhi. इससे ट्रैंक्विलिटी बढ़ती है. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को समाधि का आलंबन बनाते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट के प्रति हमारे मन में न राग जागता है न द्वेष जागता है, फॉर एग्जाम्पल आवर ओन स्केलेटन, तो चित्त शांत हो जाता है. Just by looking at that and seeing, you'll see mind just doesn't go anywhere. If you do it properly, mind sticks onto it and that's samadhi. उसे एक स्कैन में आधा घंटा लग गया, दूसरा किया पूरा 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए. माइंड वेरी लिटिल टेंडेंसी ऑफ माइंड टू गो अवे, क्योंकि एक तो अब्जॉर्बिंग काम है, एक नया है. और इसलिए कईयों ने कहा, जैसे आई रिमेम्बर पूनम ने कहा था, माइंड गॉट वेरी काम एंड क्वाइट. Yeah, that is the correct. That is why it is done. It is a tranquility meditation enabler. Okay. The whole idea is to allow only to prevent unwholesome tendencies from arising on interaction with the world, interaction with the karmathan. दूसरा है reflection for cultivating wisdom, insight. What is the thing there? You have to see the things as they really are. They are neither ugly, nor beautiful, nor repulsive, nothing. They are what they are. So that is the kind of, that's what is traditionally called vipassana. Here the objective is to remove ignorance. So when we contemplate on 4 elements, that is a insight practice. When we contemplate on the skeleton, understanding that all these bones, everything is made up of 4 elements. That's all. Earth element ज़्यादा है, लेकिन आपो धातु, जल, अग्नि धातु, वायु धातु भी है उनमें, और वो बीच में प्रकट भी हो जाती है. So we contemplate in that manner. Or second approach of insight contemplation is anicca, dukkha, anatta. We contemplate on the characteristics of whatever we are experiencing, whatever is the object of kamatthana. So we know the bony structure, the bones, the inner parts of the body, they are all not mine. They are nature's being. वो खाने का जो भोजन हो गया उसके कारण बने, और ये शरीर किस कारण से आया है वो भी हम चर्चा कर चुके हैं बहुत पहले में. So I don't want to repeat it again. So the point is that in insight meditation we want to remove ignorance. So our reflection is of that kind. In tranquility meditation we want to prevent hindrances from arising. काम छंद ना जागे, तो योनिसो मनुष्य ये अशुभ भावना किया, काम छंद ना जागे, and then we can practice samadhi. These are 2 broad categories. I mean, it's not that everything will fall in that, but broad category. अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हमने जो टर्म सतिपट्ठान में यूज होती है वो होती है प्रतिकूल मानसिकार पब्बम. प्रतिकूल का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दिया रिपल्सिव और नॉन ब्यूटीफुल, अशुभ भावना कह दिया उसको इक्विवेलेंट बना के. तो प्रतिकूल का मतलब होता है प्रतिकूल. हिंदी में शब्द बिल्कुल क्लियर है, contrary to what it appears. And why we are doing it? Because it will help us to prevent negativity from arising and help us to practice samadhi, help us to practice panya. That is the objective. But it's not imagination. It's not a metaphysical hypothesis. It is based on reality. तो जब हम कहते हैं शरीर में कंकाल है, तो बेस्ड ऑन रियलिटी. शरीर के अंदर पार्ट्स हैं, किडनी विडनी वो सब 32 अंग गिनते हैं, दे आर बेस्ड ऑन रियलिटी एंड वी कैन सी देम. दे आर नॉट ब्यूटीफुल,
They are what they are. By looking at, I had once gone to a hospital. वहाँ पे किसी ने किडनी डोनेट की थी ट्रांसप्लांट, वहाँ किडनी एक जार में पड़ी हुई थी. Not beautiful at all. जार में थी. I could see it. उसमें कोई केमिकल सॉल्यूशन में डाला हुआ था. And they were about to do a transplant for somebody. If you take out this bone and look at it separately, it's not beautiful. So I'll just show you some of the things, because we see a sanitized version of things. Let me see if I can share my screen. देख रहा है कि नहीं? नहीं देख रहा हूँ. कल दीप जी ने कहा था कि ये ऐसा तो असुंदर तो नहीं लग रहा था. मतलब I'll take some realistic photographs. अभी दिख रहा है आपको? सर आपकी शायद मतलब जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं दिख रहा. अभी आया. These are the, interestingly, two most well preserved skeletons which have been found in Rakhigadi, which is the now known to be the oldest Harappan site in the world and the biggest one. यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पे है. एक हस्बैंड और वाइफ के कंकाल साथ साथ पाए गए वहां पे. This is what they look like. Is from taken from the burial ground. तो उसमें शायद burial होता होगा. This is another from a Roman age. Actual ones which are found properly. And if you see a one after cremation, this how you get the skull and the bones and some broken. They all get break down. So that this is the big bone of the thigh. These are the ribs, and this is the part of spine. You can see that. So this is how it looks. It's not to create aversion. That also should be understood very importantly. Asubha sanyya does not mean aversion. Asubha means non-beautiful. सुंदरता नहीं है, ये मतलब. और वो सिर्फ इस तक ही सीमित नहीं है. वो सुंदर वस्तुओं में भी सुंदरता नहीं है, वहां की बात हो रही है. So we have to understand that. And this has been a standard method used by the Buddha in so many suttas to draw the people into the path, those especially those who are beautiful. Famous sutta हमने पढ़ा भी था, story about Nanda Janpad Kalyani, who was Buddha's stepsister. महाप्रजापति गौतमी की बेटी थी. Extremely beautiful. अब उनके सारे लोग भिक्षुणी बन गए तो उन्होंने कहा मैं भी बन जाती हूँ. अब वो गई तो उनको यही लगा कि भगवान तो सुंदरता को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं. तो she never went to see the Buddha. And once he called everybody, the nuns, she did not go. उन्होंने कहा वो क्यों नहीं आई. उसको बुलाया तो बेचारी आई, बड़ी शर्माती. So of course Buddha knew why she is not coming. He didn't have to ask her तुम क्यों नहीं आई. So he created using his psychic powers a woman fanning him. जैसे वो बैठे हुए उनके पास एक लेडी है, उनको पंखा कर रही है. And that lady was like a nymph, बिल्कुल परी की तरह थी.
वो नंदा ने जब उनको देखा तो उसको लगा ये तो मुझसे भी सुंदर है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूं। तो उसको अपना ब्यूटी का प्राइड कम हो गया। देन शी स्टार्टेड लुकिंग एट हर, एंड देन बुद्धा यूज्ड हिज साइकिक पावर्स, उसकी ब्यूटी धीरे धीरे फेड होती चली गई। शी स्टार्टेड एजिंग क्विकली 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 क्विकली, एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स शी वाज लाइक एन ओल्ड रेडी, कंप्लीटली झुर्रियां पड़ी हुई सारे शरीर में। तो वो दहल गई कि ये क्या हुआ। And she, of course, was intelligent enough to realize, oh, this is what is going to happen to me also. And then Buddha saw that, yeah, she has got the knack of what is the impermanence of beauty, and what is there is an aswadan in beauty, there is a danger in beauty. अगर उसमें आस्वादन में लगे रहोगे तो अटकोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। अब वो impermanence के आधार पे we created the possibility for her to practice Asubha sanya. Then he gave her Asubha sanya practice and she became a Arahant later. And her exaltation जो थेरी गाथा में वो सारे इसी बात पे बेस्ड। इसी तरह कई थेरा गाथा में और थेरी गाथा में कई अरहंतों के जो exaltation है, they are based on Asubha sanya only. That is what enabled them to really progress in the path and attain enlightenment. Now, I was very happy to note this statement from, I couldn't locate the original sutta, but Venerable Payito makes this statement, which I think was very useful. कि प्रतिकूल का अर्थ, उनको हिंदी तो नहीं मालूम, तो he doesn't understand that प्रतिकूल का मतलब होता है contrary, प्रतिकूल उस सेंस में। But he said कि ये कहना repulsive बहुत narrow है, ये disgusting कहना, it doesn't mean that. Then he has given, there are examples in scriptures of perceiving the non-repulsive in the repulsive. See that? Perceiving non-repulsive in repulsive include looking at someone who is physically unattractive with loving kindness. See the beautiful meaning of that. Sir, are you sharing the screen? Hmm? Are you sharing the screen also? No, I'm not sharing. I'm just reading one or two lines because it will distract you. इसमें और भी comments हैं ना? It is just a statement. It is not given any reference for it. अगर reference होता तो मैं देख लेता. So is pointing out that point कि contrary thinking का मतलब, wise reflection का मतलब ये भी है कि अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं जो कि जिस deformed है, शक्ल अच्छी नहीं है, then rather than getting repulsed by him or her, you develop loving kindness. You imagine somebody whose child is autistic or disabled. You will always have loving kindness towards the child. So this is one aspect of it. Or you can choose another way. You look at unpleasant object or material object, especially on the point of view of constituent elements. And then see that it has many good qualities. So, प्रतिकूल means प्रतिकूल तरीके से देखना, जिससे कि हमारा मन मैला ना हो. That is the meaning. अगर आप unpleasant object को देख के आप में द्वेष जागता है, तो you can think about the positive aspects of that. The practice which is given. अगर हमारे को किसी के प्रति द्वेष जागता है, तो कहा जाता है कि भाई उसमें गुण को, उसके दुर्गुणों को मत देखो, उनके सद्गुण को देख लो. This is what is being said. ताकि आप उसमें द्वेष न जागे. So this is a wise method. This is a kushal upaya. So all these sannyas are kushal upayas in a way, based on wise reflection. So when you look at something which is beautiful, say a beautiful woman or a beautiful man, then you can look at it either from the perspective of Ashubha sanya or from the perspective of Dhatu Manasikara Pabbam, looking at it as composed of elements which are everywhere non-repulsive. What is the
what is repulsive about dhatu, vayu dhatu, agni dhatu, or anything. So that brings you in equilibrium. That brings you in a state of equanimity. So you can apply wise reflection at different levels. Everywhere it will be wise if that reflection results in sense experience becoming an enabler of a positive quality in us. That is the trick. So why is Asubha sanya being practiced? Because on seeing something which is beautiful, there is a tendency for lust to arise, tendency for greed to arise. This applies not just for lust, applies for all across the things. So you practice 32 parts, or at least 5 parts which are visible. 5 parts तो दिख ही जाते हैं. केशा, लोमा, नखा, दंता, त्वचा तो मालूम पड़ ही जाता है. And you can reflect on it and make sure कि आपका मन में वासना ना जागे. और जो हम कर रहे हैं उसका आधार यही है. और फिर उसके माध्यम से ट्रैंक्विलिटी का एक्सपीरियंस होता है जब हम देखते हैं कि किसी चीज को कर्मस्थान बना के काम करते हैं, क्योंकि वो लस्ट को बढ़ने नहीं देता. तब मन शांत हो जाएगा. अगर लस्ट बढ़ जाएगी तो फिर आप ट्रैंक्विलिटी वगैरह कुछ नहीं कर सकते. तब तो मन में हलचल हो जाएगी. And then you remember there is a sutta in which Buddha had said to bhikkhus, how do you look at women? Women of your age, younger age, greater age. He didn't tell them you look at them with Asubha sanya. He said them, if there's a woman of much younger age, look at her like your daughter. If it's your age, look at her like your sister. Bigger age, look at her like your mother. Now, these are typical relationships, at least in Indian context, which don't allow lust to arise. That's the reason. That's a wise reflection. So these are the ways, various kushal upayas, which enlightened people have given us, so that we use them properly. I think there's a need to discuss it more, but 8 baj gaye, so we'll, I think, stop here for the time being. And subsequent discussion we'll do tomorrow. I think this needs to be driven home well, because इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये रिफ्लेक्शन हमें अष्टांगिक मार्ग पे चलने के लिए आवश्यक है. नहीं तो आप चल नहीं पाएंगे. जैसे आज सुबह चर्चा हो रही थी कि 5 शील फॉलो कर लिए तो सब कुछ हो जाएगा. हाँ, 5 शील फॉलो करेंगे तो आप अच्छे काम कर सकते हैं, पुण्य का काम कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं. शील का तो शील पुष्ट हो गए, समाधि का अभ्यास की कोशिश कर सकते हैं, प्रज्ञा जगाने की कोशिश कर सकते हैं. बट अगर कोई भी लस्ट जैसा स्ट्रॉन्ग संखार हुआ तो प्रोग्रेस नहीं होने वाली. आप कभी विचार करिए, भगवान ने 2 ही प्रतिकूल संज्ञाएं क्यों दिए? कौन सी 2 प्रतिकूल संज्ञाएं बताई गई? यू रिमेम्बर? निखिल? सर, एक तो वो जो शरीर में जो हमने पढ़ी थी, 2 प्रतिकूल संज्ञाएं पढ़ी थी ना, हमने काफी चर्चा की थी. आहार्य प्रतिकूल संज्ञा, आहार्य प्रतिकूल संज्ञा एंड ये प्रतिकूल जो मानसिकारा ऑफ द अशुभ संज्ञा. ठीक है ना? Why only these 2? Because these 2 are the very strong forces existing in us. Hunger is a very powerful force. You can't resist it. You need hunger, you need to eat something. Similarly, lust is a very powerful force. We have been born out of the lust of our parents. So it has to be properly restrained. Absolutely essential. In fact, Asubha sanya is used, I was studying a paper on psychotherapy, is used as a therapeutic method for mental disorders arising out of lust.
It's a paper in one of the international Buddhist journals. So we have to see reflections in accordance with Four Noble Truths. Reflection in accordance with Paticca Samutpad. They're all wise yoniso manasikaras, which help us in our practice. In exactly the same way, this Asubha sanyya should be seen as. And when you want to progress on the Eightfold Path, you have to realize that the sanyya includes samma ditthi, samma sankappo. Please think about that. Think about that. What does samma sankappo mean? Nekhamma sankappo. What does it mean for a grahast? Now, these are integral parts of path. You can't say that we will not practice Nekhamma sankappo and I will barely benefit and develop on the path. Because samma sankappo and samma ditti help each other. They are anya manya pachayo. They are not, it's not that samma ditti is going to give this. Yeah, this is going to give this, but samma sankappo is also going to give samma ditti. Michha sankappo is going to give michha ditti. This is something I would request you to reflect on today. Tomorrow we'll discuss it further because these are very fundamental things which, if they are not clear, we may not be able to appreciate what exactly is the importance of various things which we are doing. Okay. Thank you. I think मैं ना चाहते हुए भी time काफी हो गया. Okay. Maybe we can request Nikhil to show that video. जो वीडियो था ना जब वुमेन लेटिंग जो आपने रिवर्स किया था फिर यंग एज टू ओल्ड एज. सो हमारे पास साइकिक पावर तो है नहीं भगवान की तरह. वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो वील यूज दैट टू सी. ध्यान से देखना, देखती रहे. Can sit quietly for 10-15 minutes and then if there are anything further we can take. Just reflect on what I said and this picture.
If there's one or two comments or anything you want to ask if necessary, you can take that. Very grateful to you, Professor Dhar, for today's discussion. It puts many things in the right perspective. These problems arise from time to time. Thank you very much. Thank you. Thanks to everybody who asked questions so that we can clarify them. While this, सर मुझे ना ये जैसे अभी वीडियो भी दिखाया आपने या आपने पहले स्केलेटन भी दिखाया, मुझे कुछ इसमें से हिट नहीं कर रहा। मैंने जैसे the desired impact is not happening. Okay, जैसे that's all ये right. तो So, पहला वीडियो नहीं देखा मैंने, ऐसे और भी बहुत वीडियो देखे हैं एलिजाबेथ टेलर और जो सुंदर सुंदर लोग हैं नेट पे, बट वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और मैंने वो किया, मैंने अपनी मॉम को देखा है कि when her cousins used to come and say that she was supposed to be the prettiest among them, and then when chemo started, she not only got old but she got gray, and वो सब देखने के बावजूद भी वो नहीं आ रहा मुझे। क्या बोलूं मैं? one has to reflect on it, no? भगवान कहते हैं ना, जब भी कहें this is what's going to happen to me also. That's always thought, हाँ, continuous. मगर मुझे ओल्ड एज ही बुरा नहीं लग रहा। मुझे बस ये लगता है कि आपके फिजिकल वो कम हो जाते हैं, आप वो काम नहीं कर सकते एंड आप वो, बट मुझे ओल्ड एज ऐसा लग ही नहीं रहा कि बहुत कुछ वो है। मैंने मैं यहाँ पे देखती हूँ कितने सारे लोग हैं जो डिसेबिलिटी उसमें है, बट दे आर स्टिल गोइंग अराउंड विद देयर लाइफ। Yeah, why मैंने not? Of course. It doesn't mean that we commit suicide. Of course. No, I'm just saying that it being a liability or Then whatever. the ultimate thing then for such situation is to think about the suffering of birth and death again and again and again. Now that also will create some impact if I have some element of understanding of suffering which happens in birth, and what is it if I contemplate on the suffering I have gone through in this life. If I don't contemplate in a proper manner, brother, yoniso manasikara and ayoniso manasikara. If you don't contemplate it properly, then impact will not be there. सिर्फ देखने मात्र से, जैसे बताया था फ्रेंड को बता रही थी कि भाई डॉक्टर लोग तो देखते ही रहते हैं इसको दिन रात, तुम यूज टू इट, ये ठीक है, होता ही है, क्या है, इट डजंट मैटर। बट सर जैसे मुझे स्केलेटन से पहले बहुत डर लगता था, अब बस ये हो गया कि मुझे डर नहीं लगता, मगर जो इम्पैक्ट है वो तो नहीं आ रहा ना। डर हटाना तो इसका फर्क इसका all I can वो think नहीं is, था। yeah, all I can think is start reflecting more deeply, that's all. योनिसो मनसिकारा इसकी बहुत जरूरत होती है, तभी प्रज्ञा जागती है, उससे कम से उसके बगैर काम होता नहीं है। Unless we reflect deeply on the experiences, panya will not rise. This is a part of the mundane panya, and then it leads to transcendent panya. तो वो उनको रिफ्लेक्ट करने से आएगा, तो आप करके देखो। सर इसके लिए आई थिंक सबसे पहले मुझे समाधि कुछ Come over करना for a cup पड़ेगा। of tea and then we'll talk, okay? हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, आंटी बुला रही हैं दोनों। हाँ जी। Good, so let us do some chanting of metta or parita, whatever makes the moments. Yes, sir. पुण्य समर्पण एवं शुभ संकल्प की गाथाएं। हन्दमयं उदस्नादिठानि गाथायो भड़ामसे आए हम पुण्य समर्पण एवं शुभ संकल्प
की गाथाओं का पाठ करें। इमिना पुण्यकम्मेन उपध्याया गुणोत्तरा आचार्य उपकारा च माता पिता च यातिका। मेरे इन पुण्यों से मेरे गुणवान उपाध्याय, मेरे उपकारी आचार्य, माता पिता एवं संबंधी, सूर्यो चंद्रमा राजा गुणवंता नरापि च, ब्रह्ममारा च इंदा च, लोकपाला च देवता, यमो मित्ता मनुष्या च, मच्छत्ता वेरिकापि च। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु पुण्यानि पक्तानि मे। सूर्य चंद्रमा राजा तथा गुणवान नर, ब्रह्मा मार इंद्र तथा लोकपाल देवता यम, सभी मनुष्य चाहे मित्र हो तटस्थ अथवा बैरी हो, मेरे किए गए पुण्यों से सभी प्राणी सुखी हो। सुखं क्षतिविदं देन्तु क्षिपं पापेथ भोमृतम्। इमिना पुण्यकम्मेन इमिना उद्देश्येन च क्षिप आहं सुलभे चैव तन्हुपादानच्छेदनम्। ये संताने हीना धम्मा यावन्निब्बानतो ममं न सन्तु सर्वदा येव यत्र जातो भवे भवे। वे इन्हें त्रिविध सुख दें और वे शीघ्र अमृत पद को प्राप्त करें। इन पुण्य कर्मों से एवं इस समर्पण से तृष्णा एवं आसक्ति का शीघ्र भेदन सुलभ हो। जब तक मुझे निर्वाण का साक्षात्कार हो, जहाँ कहीं भी जन्म हो, मन की अहितकर वृत्तियों का सर्वदा नाश हो। उजु चित्तं सतीपय्या सल्लेखो वीर्यं हिना मारा लभन्तु नौकासं कातुं च वीर्येषु मे। मेरा सीधा चित्त सती प्रज्ञा तप एवं पुरुषार्थ से युक्त हो। मार को मेरा पुरुषार्थ कमजोर करने का कोई अवसर ना मिले। बुद्धादिपवरो नाथो धम्मो नाथो वरुत्तमो नाथो पच्चैकबुद्धो च संघो नाथोत्तरो ममं। तेष उत्तमानुभावेन मार ओकासं लभन्तु माम्। बुद्ध मेरे उत्तम नाथ है, धम्म मेरा श्रेष्ठ उत्तम नाथ है, प्रत्येक बुद्ध मेरे नाथ है तथा संघ मेरा श्रेष्ठ नाथ है। इन सब के उत्तम प्रभाव से मार्ग की शक्तियों को कोई अवसर ना मिले। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। Thank you, sir. Thank you, everyone. Yes, sir. धन्यवाद. Thank you. Thank you. Thank Thank you, you sir. very much. Thank you. Namaskar.